अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग बखैर व आफियत से होंगे और लर्निंग के इस जर्नी में आप काफ़ी चीज़ें सीख रहे होंगे और बहुत सारे नए एवेन्यूज़ एक्सप्लोर कर रहे होंगे, बहुत सारे नए कंसेप्ट आप सीख रहे होंगे। सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फेसबुक पिक्सल के हवाले से कि फेसबुक में, फेसबुक एड्स मैनेजर में, फेसबुक बिजनेस सूट में पिक्सल क्या होता है, स्टैंडर्ड इवेंट्स क्या होते हैं और कस्टम कन्वर्जन्स क्या होती हैं, कैसे करते हैं, इनके साथ कैसे डील किया जाता है। सो हम वन बाय वन इन डेप्थ एंड इन डिटेल हर एक चीज़ को पढ़ेंगे। सो आई नीड योर अटेंशन स्पैन। आप स्लोली आप इसको लर्न करें और जैसे जैसे मैं आपको साथ लेके जा रहा हूँ आप इसको साथ साथ अप्लाई भी करते जाएं। अगर आप इसको अप्लाई करते जाएंगे तो होगा ये कि आप लोगों की लर्निंग बड़ी अच्छी हो जाएगी। आप इसको 1 2 3 बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें सारी जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। सो आइए मूव करते हैं कि फेसबुक पिक्सल है क्या बेसिकली। सो फेसबुक पिक्सल इज अ कोड बेसिकली you add to your website or application that enables you to track and measure different kind of actions that people take on your website, and it also enables you to build audience of these users to target via Facebook ads. तो अब हमें समझ आ गई कि पूरी वेबसाइट पे किसी भी विजिटर ने कोई भी काम किया, आके कोई भी अपना एक्शन किया, कोई भी इवेंट हुआ, तो हम उस चीज को ट्रैक कर सकते हैं। और उस ट्रैक कैसे कर सकते हैं अपने फेसबुक ऐड में, उसको चूंकि ट्रैक फेसबुक ऐड में ही होगा। सो उस ट्रैकिंग के लिए जो चीज हम यूज करेंगे, जो कोड यूज करेंगे, जो स्निपेट हम यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज फेसबुक पिक्सल। फॉर एग्जांपल, when someone visits your website and takes an action, the Facebook pixel fires and tracks these actions. The Facebook pixel not only enables you to know your customers took an action after seeing your Facebook ad, but it also stores this user in your Facebook custom audience for tracking the future remarketing. So as more and more action occurs on your website, Facebook gets better at delivering your ads to people who are more likely to take certain actions. So Facebook Pixel basically, जैसे किसी बंदे ने आके कोई एक्शन लिया आपकी वेबसाइट पे, कोई एक्टिविटी की, तो वहां से उस कोड ने डायरेक्टली फेसबुक को बता दिया, फेसबुक एड्स मैनेजर को, कि इस स्पेसिफिक यूजर ने ये एक्शन टेक किया। सो उसको वो मेजर करना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने प्रोडक्ट एक्सप्लोर किया, प्रोडक्ट एक्सप्लोर करने के बाद आपने प्रॉपर्टीज और उसके फीचर सारे देख लिए, फिर आप उसके ऐड टू कार्ट आपने कर लिया, फिर आप ऐड टू प्रोसीड टू पेमेंट, लेकिन आप पेमेंट नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन फेसबुक पिक्सल के थ्रू ट्रैक हो रही हैं आपकी वेबसाइट पे। अगर आप फेसबुक पिक्सल आपने इंस्टॉल किया होगा, सो इस कोड के थ्रू आप अपने फेसबुक मैनेजर में, एड मैनेजर में आप ये चीज़ें इजीली ट्रैक कर सकते हैं। So the pixel code will be pasted just once before the closing head tag in your website. Adding the Facebook pixel to your website will track all the website's pages, all actions and user that access them. So यहाँ से आपको मैं यहाँ पे जस्ट मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में बता दिया। आगे जाके मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि इन एक्चुअल वेबसाइट के हेड टैग में किस तरह से फेसबुक पिक्सल को इंसर्ट करते हैं, किस तरह से पेस्ट करते हैं। सो द मेन पर्पस ऑफ फेसबुक पिक्सल, जैसे मैंने आपको बता दिया, इज टू ट्रैक यूजर्स दैट नेविगेट टू सर्टेन पेज ऑफ योर वेबसाइट। सो देयर आर डिफरेंट वे टू यूज इट। फर्स्ट वन, टू मेजर कन्वर्जन्स, हाउ मेनी ऑर्डर्स हैव बीन डन ऑन योर वेबसाइट, हाउ मेनी साइन अप्स हैव बीन डन एंड हाउ मेनी अदर एक्शंस हैव बीन कंप्लीटेड बाय अदर यूजर्स। सो ये सारी चीज़ें आप उनके कन्वर्जन मेजर कर सकते हैं। द सेकेंड थिंग, यू कैन गेट इंसाइट अबाउट द पीपल हु आर विजिटिंग योर वेबसाइट। फिर आप एक कस्टम ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं जिसको लेटर ऑन आप रीमार्केटिंग के थ्रू कोई भी एक्शन आप उनसे डेराइव करवा सकते हैं। आप लुक अलाइक ऑडियंस भी, लुक अलाइक ऑडियंस इज बेसिकली पीपल हु आर सिमिलर टू योर बेस्ट कस्टमर और बेस्ट क्लाइंट।
तो आप लुक लाइक ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं और फिर उन्हीं लोगों को जो आपने कस्टम ऑडियंस या लुक लाइक ऑडियंस एक डेवलप की होगी या जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट विजिट की है उन लोगों को आप रीमार्केट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, हम पहले पढ़ चुके वार्म ट्रैफिक, हॉट ट्रैफिक एंड कोल्ड ट्रैफिक। अब हम देखते हैं कि पिक्सल के थ्रू, फेसबुक पिक्सल के थ्रू हम वार्म ट्रैफिक को किस तरह से फोकस कर सकते हैं। सो दीज यूजर्स हु हैव बीन टू योर साइट, I've already called them as the warm traffic, as they have already been to your website and know your brand. Therefore, they are more likely to click your remarketing ad and targeting them in the future. For example, our Facebook pixel and custom audience tracked a user who made it to our product page but never made a purchase. So no worries, it will get busy. With the Facebook pixel installed, we can now remarket and target this specific product to this specific person via Facebook कस्टम ऑडियंस। 7 टच पॉइंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि परचेज तक जाने के लिए नॉर्मल जो यूजर को डिफरेंट काइंड ऑफ टच पॉइंट से गुजरना पड़ता है, डिफरेंट जगह, टच पॉइंट का मतलब डिफरेंट जगहों से गुजरना पड़ता है, डिफरेंट टच पॉइंट्स पे आपके ब्रांड के साथ उसका इंटरेक्शन होता है। सो पीपल नीड एन एवरेज 7 टच पॉइंट्स before they purchase something. So this means the average customer needs to see your website, blog post, email marketing, Facebook post, Insta story, online ad. So 7 times before they are ready to make a purchase, before they are ready to sign up or taking any action. So with the power of Facebook pixel, we can retarget and re-engage these warm audiences with very ease. So फेसबुक पिक्सल को क्रिएट कैसे करते हैं? अच्छा जी, आपने करना क्या है कि यू हैव टू विजिट बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर में आपने जाना है जी इवेंट मैनेजर में। इवेंट मैनेजर में आपने जाकर क्लिक ऑन द डाटा सोर्स, जो लेफ्ट साइड बार पे डाटा सोर्स उस पर आपने क्लिक किया। फिर आपके पास, अगर आपके पास ऑलरेडी पिक्सल है तो वो डाटा सोर्स में मेन्यू में अपीयर हो जाएगा, जैसे वो एरो ऐड के साथ जो मैंने इंडिकेशन दी हुई है। अगर आपका पिक्सल क्रिएटेड नहीं है, यू विल हैव द ऑप्शन टू कनेक्ट अ डाटा सोर्स। सो यहाँ पे आप क्लिक करके एक डाटा सोर्स को कनेक्ट करेंगे। अब डाटा सोर्स को कनेक्ट कैसे करेंगे? सो यहाँ पे हम सीखेंगे वेबसाइट के बारे में, और सिमिलर प्रोसेस ऑफलाइन और वेब का भी होगा, एप्लीकेशन का भी होगा। सो वी विल बी क्रिएटिंग अ फेसबुक पिक्सल फॉर वेबसाइट ओवरकैप। सो सिलेक्ट द वेब। नाउ सिलेक्ट द फेसबुक पिक्सल। जैसे ही आपने वेब पे क्लिक किया तो आपने फेसबुक पिक्सल पे क्लिक किया। नाउ क्लिक कनेक्ट। नेम योर फेसबुक पिक्सल फॉर योर ओन इंटरनल रेफरेंस। तो नाम भी आपने ऐसा देना है ताकि फ्यूचर में आप उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकें उस पिक्सल के नाम के साथ उसको। सो पेस्ट इन योर वेबसाइट यूआरएल। नीचे जहाँ पे https है वहाँ पे आपने अपनी यूआरएल पेस्ट करनी है। उसके बाद जब आपने पिक्सल का नाम रख दिया, चेक योर वेबसाइट फॉर इजी सेटअप ऑप्शन। सो आपने यहाँ पे अपनी, मैंने क्लाइंट ग्रूम्स उसका नाम था, उसकी वेबसाइट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब कंटिन्यू करते हैं जी। जब आप कंटिन्यू करेंगे, सो रिफ्रेश योर ब्राउजर एंड मेक श्योर यू हैव योर बिजनेस मैनेजर आईडी सिलेक्टेड इन दिस टॉप राइट मेन्यू। देखिए मेरे पास 2 थे, एक सी और एक मेरी अपनी। तो वहाँ पे रिफ्रेश योर ब्राउजर, देन यू हैव टू मेक श्योर योर बिजनेस मैनेजर आईडी सिलेक्टेड इन दिस टॉप राइट मेन्यू। उसके बाद जी remember 1 pixel per ad account, 1 pixel per website and 1 ad account per website। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपने हर अकाउंट के लिए 1 पिक्सल रखना है, हर वेबसाइट के लिए एक आपने पिक्सल रखना है, और हर वेबसाइट का 1 अकाउंट रखना है आपने। सो यू वांट टू कीप योर फेसबुक एड ट्रैकिंग एंड डाटा सेपरेट for each website to increase tracking accuracy।
तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ये आप नोट कर लीजिएगा। तो मोस्टली लोग इस तरह करते हैं कि एक पिक्सल बहुत सारे एड अकाउंट्स पे डाल देते हैं, या एक बहुत सारी वेबसाइट पे एक ही पिक्सल लगा रहे होते हैं, वो समझ नहीं आ रही थी, वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। या फिर बहुत सारे ऐड अकाउंट एक वेबसाइट को दे देते हैं। सो वहाँ से आप जब ट्रैकिंग कर रहे होंगे तो वो ट्रैकिंग कंफ्यूज होगी, मज डाटा होगा, कंफ्यूज डाटा होगा, वहाँ से आप ट्रैकिंग आपकी एक्यूरेसी आप लूज करेंगे। सो आपने हमेशा यू हैव टू रिमेंबर 1 पिक्सल पर एड अकाउंट, 1 पिक्सल पर वेबसाइट एंड 1 एड अकाउंट पर वेबसाइट। ये चीजें आपने माइंड में रखनी। नाउ कंटिन्यू पिक्सल सेटअप। अब आपने पिक्सल सेटअप की तरफ कंटिन्यू करना है। सो एज यू कैन सी ओवर न्यूली क्रिएटेड फेसबुक पिक्सल अपीयर अंडर द डाटा सोर्स मेन्यू। नाउ क्लिक टू सेलेक्ट न्यू फेसबुक पिक्सल नेम इन द डाटा सोर्स, और ये हाईलाइट भी हो जाता है। क्लिक द कंटिन्यू पिक्सल सेटअप बटन। तो देयर आर 3 वेज टू इंस्टॉल योर फेसबुक पिक्सल कोड। पहला, आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, पार्टनर इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, और ईमेल टू डेवलपर ये भी आप कर सकते हैं। इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। इंस्टॉलिंग द फेसबुक पिक्सल। So if you have access to your website code, or if your website is on the Facebook partner integration list, you can add the Facebook pixel by yourself. Easy है थोड़ा। If you are not comfortable with coding, और अगर आपकी उस पे WordPress पे वेबसाइट बनी हुई है, फिर वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, वहाँ से तो आप इजीली कर सकते हैं खुद भी। So I highly advise you make a hire an Upwork or have a web developer install for it। या आप कहीं फ्रीलांसिंग वेबसाइट से कोई बंदा पकड़ लें थोड़े से पैसों पे, उससे करवा लें, और या फिर आप वेब डेवलपर से करवा लें, किसी जो आपकी कंपनी में होगा, आपके ब्रांड में होगा। नाउ you will need to place the Facebook pixel base code on all pages of your website. So this is most easily done by pasting the Facebook pixel base code once in your website header coding before the closing head tag. Therefore, installing the pixel base code on every page of your website, since your header file by default appears on every page. So the Facebook pixel base code will just track every page view event. So you will need to add specific Facebook standard event pixel coding on the specific page of your website for more in-depth tracking. So such as tracking user who click the add to cart button or user who made it to the your purchase confirmation page. So जहाँ पे हम स्टैंडर्ड इवेंट, स्पेसिफिक इवेंट की बात करेंगे, अब आगे आके आपको ये चीज़ समझना आना शुरू हो जाएगी कि अगर मैं कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी ट्रैक करना चाहूँ, जैसे पेज व्यूज ट्रैक करना चाहूँ तो उसके लिए किस तरह से होगा, कोई स्टैंडर्ड इवेंट ट्रैक करना चाहूँ तो उसके लिए कैसे होगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, आप साथ साथ चलेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगी। नाउ अब हम पहला मेथड सीखेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल फेसबुक पिक्सल मैन्युअली टू योर वेबसाइट। अच्छा जी, हम कनेक्ट वेबसाइट एक्टिविटी यूजिंग पिक्सल पे गए, और उसके बाद हमारे पास इंस्टॉल्ड कोड मैनुअली हमने क्लिक किया। सो you need to install the Facebook pixel base code on each page of your website to begin the tracking event. So this is typically done by adding the pixel to your website global header file. कैसे रीच करते हुए मैं आपको सिखा दूंगा, कोई इशू नहीं। Locate the header file in your CMS website code, then find the head, ये जो head to head tags within this header file. So copy paste the Facebook pixel code at the bottom of the header section just before the closing head tag. कैसे करते हैं आइए मैं बताता हूँ। So copy your Facebook pixel base code and install it in your website header. Paste it before the closing head tag. अच्छा जी, आपने if you wanted to manually install the pixel in your WordPress, navigate to the editor in your WordPress admin backend under ये appearance के बिल्कुल नीचे आ जाएगा, जहाँ पे themes, customize pages वगैरह आते हैं, वहाँ पे नीचे editor आ जाएगा लेफ्ट साइड बार में। फिर select to edit your theme header file। आप जैसे गए तो आपने theme header file राइट हैंड साइड पे बिफोर क्लोजिंग हेड आपने ये पुट कर दें। फाइनली क्लिक अपडेट फाइल टू सेव योर चेंजेस। सो यहाँ पे फाइंड द क्लोजिंग हेड टैग, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। सो यहाँ पे आपने ये अपना पिक्सल कोड जो कॉपी करके ले आए हैं ये आपने पेस्ट करना है। नाउ दैट वी हैव ओवर फेसबुक पिक्सल बेस कोड इंस्टॉल्ड एंड क्लिक कंटिन्यू, टर्न ऑन। यहाँ पे जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग का एक ऑप्शन आएगा, आपने उसको टर्न ऑन कर लेना है, इसको ऑन पे रख देना है, और दिस हेल्प्स यू रीच यू मोर पीपल विद रीमार्केटिंग कैंपेन। अच्छा जी, वेरीफाई द कस्टमर इंफॉर्मेशन यू वांट टू सेंड। ईमेल है, जेंडर है, सिटी, स्टेट, जिप कोड
फर्स्ट एंड लास्ट नेम, फोन नंबर, ये सारी चीजें आप ट्रैक कर सकते हैं। नाउ the final step is to install the standard event on your website via the event setup tool. अब the Facebook pixel base code alone is just tracking all page views, so you need to install standard event on specific page to track specific event. For example, button click, page load, add to cart, purchase, lead generation. So we will teach you how to use the event setup tool later in this lecture. तो जो अभी तक हमने पढ़ा है वो आपको सिर्फ बताएगा पेज व्यूज के बारे में, सारे पेज पे व्यूज कितने हैं। तो अगर हम किसी स्पेसिफिक इवेंट को ट्रैक करना चाह रहे हो तो हम इवेंट सेटअप टूल वो चीज़ें देखेंगे आगे। सो हमने पहला ऑप्शन पढ़ा था कि मैन्युअली करना, किस तरह से हम पिक्सल को, फेसबुक पिक्सल को मैन्युअली इंस्टॉल करते हैं। नाउ वी विल बी looking at installing Facebook pixel by using code through a partner integration। आए जी, use a partner। अच्छा जी, the need for manually installing the Facebook pixel on pixel code on your website is rare these days, as Facebook has a ton of software integration in place for automatic installation of your pixel code। So Facebook partner integration के लिए आप ये लिंक भी देख सकते हैं। ये सारे आपकी मोस्टली हमारी जो वेबसाइट बनती हैं वो हमारी बनती है वर्डप्रेस पे। सो ओवर वेबसाइट यूजेस द सॉफ्टवेयर वर्डप्रेस, सो वी सिलेक्ट दैट ऑप्शन एंड टॉगल ऑन एडवांस्ड मैचिंग, राइट, इसको टिक मार्क एंड देन कंटिन्यू। डाउनलोड द फेसबुक पिक्सल प्लगइन फॉर वर्डप्रेस। आपने यहाँ से क्लिक किया डाउनलोड पे, आपको डाउनलोड हो गया। नाउ हाउ टू इंस्टॉल, ये जो हमारा डाउनलोड install WordPress on your domain। So the CMS we use for nearly all of our clients is WordPress। पहले भी, और जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, जो चीज़ें पहले भी मैंने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में सिखाई हैं वो WordPress की वेबसाइट डेवलप करना सिखाया। So it is free to install and it has a ton of modern themes to choose from। Most themes are free, support the e-commerce plugin, WooCommerce, making your WordPress an online store। I could go on all day about the benefits of WordPress। So especially since it's a free versus the other platform that charge you monthly fees like Shopify or Squarespace। so WordPress आप एक्सपीरियंस करें। डिजिटल मीडिया वालों ने तो कर लिया, सोशल मीडिया वाले WordPress के बारे में सीखें। now it's time to install the zip plugin on your WordPress site। अच्छा जी, log in to your WordPress admin, click the add new option under the plugin menu in the left sidebar। add new पे आपने क्लिक कर लिया, अपलोड प्लगइन के बटन पे अब आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने फाइल को सिलेक्ट करना है जो आपने अभी फेसबुक से डाउनलोड की थी। उसके बाद आपने एक्टिवेट कर देना है, इंस्टॉल करना है प्लगइन एंड देन यू हैव टू एक्टिवेट द प्लगइन। नाउ फेसबुक पिक्सल प्लगइन की तरफ आप नेविगेट करें, जो सेटिंग है बिल्कुल नीचे आ जाता है लेफ्ट साइड बार पे। सिंस यू डाउनलोडेड द फेसबुक पिक्सल वर्डप्रेस प्लगइन डायरेक्टली फ्रॉम योर फेसबुक एड अकाउंट, so your pixel id will be populated automatically in this field। so pixel id आप already यहाँ पे आ गई है। now if for some reason the plugin did not have the pixel id populated already, you can copy this pixel id right from your Facebook pixel page, located under your pixel name in the data source menu। data source कहाँ से आता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। so these are simply the steps I just want to teach you for installing the plugin on WordPress। so click on the continue button until the verify your connections setup। so paste the URL you just installed the Facebook pixel on to test it। alright, आपने जिस वेबसाइट के वर्डप्रेस में लॉगिन करके आपने कोड पेस्ट किया, यहाँ पे कोड आपने पेस्ट तो पहला मैनुअल केस था जिसमें इंस्टॉल किया अभी, उसका आप URL यहाँ पे आप पेस्ट करें। Click the send test traffic button to navigate to the website you just installed this pixel on to verify the pixel is active and working। so यहाँ से आपने ट्रैफिक सेंड करनी है। the Facebook pixel was installed correctly and is now active। click continue। next we have the option to set up our standard events। so standard event basically specific चीजें होती हैं जो हम अपनी वेबसाइट पे ट्रैक करना चाह रहे हैं, कोई साइन अप है या कोई परचेज है। सो आई विल टीच यू हाउ टू यूज द इवेंट सेटअप टूल आफ्टर लेटर इन दिस लेक्चर। सो जस्ट क्लिक कंटिन्यू। इवेंट ट्रैकिंग ये मैं आपको इवेंट सेटअप टूल में आपको यहाँ से सिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पे भी हम
कंटिन्यू क्लिक करते हैं। द फेसबुक पिक्सल सेटअप इज कंप्लीट, क्लोज इट। अब हम जो तीसरा पहला ऑप्शन की फेसबुक पिक्सल को हम कर सकते हैं जनाब आपके मैन्युअली भी, प्लगइन के थ्रू भी। और अब हम आ रहे हैं ईमेल इंस्ट्रक्शन टू अ डेवलपर, थर्ड जो हमारा वे था पिक्सल इंस्टॉल करने का। नाउ use this or hire a web developer to install your Facebook pixel. You can email them your Facebook pixel installation instruction directly by clicking the email link. ये चूंकि आप किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे जहाँ पे आपके पास अलग से डेवलपर होगा या किसी क्लाइंट का एक अलग से डेवलपर है, तो आप उससे डेवलपर के जो सर्विसेज हैं डेवलपर की सपोर्ट आप जरूर लें फेसबुक पिक्सल को सेटअप करने में। So just enter their email address and click send. Now refresh your event manager data source or Facebook pixel page and ensure your Facebook pixel is active and tracking. So view your standard event data. अब आ जाते हैं Facebook pixel tools पे। मेरा ख्याल है हम ये सारी चीजें बड़ी इजीली आप लोग इस चीज को कंप्रीहेंड करेंगे अगर आप एक दो बार लेक्चर को सुनेंगे। मेरी कोशिश है कि आप एक बार इसको सुने, अगर मेरे साथ साथ आप प्रोग्रेस में साथ साथ डेवलप हो रहे हैं तो ये आपको बड़ी इजीली पहली बात से ही समझ आ जाएगी। नाउ फेसबुक पिक्सल टूल्स। अच्छा जी, फेसबुक पिक्सल टूल एडिशनल सोर्स, आपने इस लिंक पे जाना है पिक्सल सेटअप गेट स्टार्टेड पे। क्रोम फेसबुक पिक्सल हेल्पर, आपने ये developer.facebook.com/doc फेसबुक पिक्सल /पिक्सल हेल्पर, इस यहाँ से भी आपको फेसबुक पिक्सल हेल्पर आपको इजीली मिल जाएगा। क्रोम फेसबुक पिक्सल हेल्पर ये एक एप्लीकेशन एक एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो वंस इंस्टॉल इन योर क्रोम ब्राउजर, क्लिक द फेसबुक पिक्सल हेल्पर एक्सटेंशन बटन टू सी इफ द फेसबुक पिक्सल इज एक्टिव on your various website pages or even on any other website. So this is a great to research what events other brands are tracking. ये आपको फेसबुक पिक्सल हेल्पर जो है ये आपको फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करने में ये बड़ा हेल्प करता है, ताकि वो पता होना चाहिए कि आपके कंपेटिटर्स क्या इवेंट ट्रैक कर रहे हैं। जब आपको पता चलेगा कि आपके कंपेटिटर्स क्या इवेंट ट्रैक कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आप कंपेटिटर पे एक इंसाइट जो मिलेगी इसके थ्रू, वो आप वही चीज ट्रैक करके और कंपेटिटर का और अपना रिजल्ट कंपेयर करके आप कंपेटिटर को एक टफ टाइम भी दे सकते हैं। अब आते हैं जी स्टैंडर्ड इवेंट्स प्लस कस्टम कन्वर्जन्स पे। अच्छा जी, स्टैंडर्ड इवेंट क्या है? When an action occurs on your website, for example when some customer click the add to cart button, your Facebook pixel hires and track this as an event. So events are actions that happen on your website. Event का लफ्ज जो है, अब इससे पहले तो चूंकि हम अंग्रेजी में इसको त्यौहार, उर्दू में त्यौहार पढ़ चुके हैं, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा लेके चल रहे होते हैं। तो जब फेसबुक इवेंट समझने की बारी आती है तो हम इसको थोड़ा इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि इवेंट का मतलब होता है एक्शन, ये आप माइंड में रख लें। सो इवेंट्स आर एक्शंस दैट हैपन ऑन योर वेबसाइट ईदर एज अ रिजल्ट ऑफ फेसबुक एड और ऑर्गेनिक रीच। सो स्टैंडर्ड इवेंट्स आर predefined actions that Facebook recognizes and track. So by adding standard event coding in addition to your Facebook pixel base code, you will begin tracking each standard event, so which you can then optimize for conversion and build audience from there. Now custom conversion. Custom conversion let you create rules for standard events for our URLs. So use custom conversion to optimize your ad delivery for custom events or specific URL traffic, so which doesn't fall into a predefined standard event category. So आपने pixel, standard event and custom conversion, ये चीजें आपने माइंड में रखनी। So custom conversion also allows you to create standard events without additional code. So if you have the Facebook pixel base code on your website, you can use URL rules to track standard events, so you won't need to add additional event code to your website if you build a custom conversion for it. Alright, so standard event और custom conversions में क्या आपस में इनका वर्सेस इनका क्या है, इनका कंपैरिजन क्या है?
So standard event basically allow you to track specific event, optimize for conversion, and build audience all with the simple addition of coding to your website or application. Custom conversion basically allow you to customize any event by adding rules and parameters that define specific customer action. तो अगर आपने बेस्ट प्रैक्टिस फॉर कस्टमर कन्वर्जन है तो फेसबुक के इस पेज पे जाके facebook.com/business-help और ये जो मैंने एक दिया हुआ लिंक, आप कस्टम कन्वर्जन अगर आप लिखेंगे, वैसे भी टाइप करेंगे आप गूगल में कस्टम कन्वर्जन बाय फेसबुक, तो ये आपके पास आ जाएगा, या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कस्टम कन्वर्जन, तो ये आपके पास आ जाएगा. सो दिस वाज बेसिकली द मेन डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड इवेंट्स एंड कस्टम कन्वर्जन्स. नाउ standard events created by adding to the Facebook pixel base code, and custom conversions, no extra code required, created in ads manager using URL rules. Standard events customized with parameters, and custom conversion customized with granular URL rules. ग्रेनुलर का मतलब है कुछ स्पेसिफिक, बहुत इन डेप्थ जाके किसी स्पेसिफिक हम अगर कोई ट्रैकिंग करना चाह रहे हैं तो कस्टमाइज्ड विद ग्रेनुलर यूआरएल रूल्स. उसके बाद स्टैंडर्ड इवेंट्स आर एग्रीगेटेड रिपोर्टिंग देते हैं वो, लेकिन कस्टम कन्वर्जन्स सेपरेट रिपोर्टिंग देते हैं. कैसे? कस्टम तो हमारे अपनी मर्जी का होगा कि हम ये स्पेसिफिक चीज, ये स्पेसिफिक इवेंट, ये स्पेसिफिक एक्शन हम ट्रैक करना चाह रहे हैं. सो उसमें कोई एग्रीगेट रिपोर्टिंग नहीं होगी, उसमें वही रिपोर्टिंग होगी जो हम ट्रैक करना चाह रहे होंगे. तो कस्टम कन्वर्जन की सेपरेट रिपोर्टिंग होगी. एंड स्टैंडर्ड इवेंट्स में compatible with dynamic product ad. So custom conversion is not compatible with dynamic product ad. Dynamic product ad के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. Now standard events क्या हो सकते हैं? Standard events allow you to track specific events, optimize with conversion, and build audience on your website. So these events include, among other, add to cart, contact, initial checkout, lead, purchasing, scheduling, and trialing जो होते start trial. Standard events. The list of standard event website action is ever going to cater to the different events you want to track on your application or website. So see the updated list here. यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं. Add to cart का डिस्क्रिप्शन क्या होती है? Track when items are added to shopping cart. Add payment info. Track when payment information is added in the checkout flow. Click landing on billing page, the billing information. Add to wish list. Track when items are added to a wish list. Complete registration. So track when registration form is completed. Contact, a telephone, SMS, email, chat, or any other type of contact. So इनके स्टैंडर्ड इवेंट की ये कोडिंग है. ये जो आगे FBQ, ब्रैकेट, उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी, ट्रैक, ये सब जो ऐड टू कार्ट, ऐड पेमेंट इन्फो, ऐड टू विश लिस्ट, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें इनके स्टैंडर्ड इवेंट की कोडिंग है. नाउ both custom conversions and standard events require the installation of the Facebook pixel base code on your website या एप्लीकेशन पे. बेस कोड, नोटिस द बेस कोड जस्ट ट्रैक द पेज व्यूज. जैसे हमने पहले बिल्कुल स्टार्ट में हमने सीखा था कि मैन्युअली किस तरह से, या प्लगइन के थ्रू या फिर डेवलपर के थ्रू किस तरह से उसको हम इंस्टॉल करते हैं. सो बेस कोड आपने नोटिस द बेस कोड जस्ट ट्रैक द पेज views. We need to track other events via standard event codes. So both custom conversions and standard event require the installation of the Facebook pixel base code on your website or application that we have already covered in the earlier in this lecture. Now Facebook पेज का जो Facebook pixel base code है उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं? So the simplest way to install the Facebook pixel base code is by pasting the pixel base code between the head tags of your website header copy code, so every page view will be tracked. समझ गए? So ये base code है आपका, track page views. Now how to add a standard event code to the base code?
This is the next thing जो हम कि how to add a standard event code to the base code. So after you have installed the Facebook Pixel base code on your website, you will need to add events to specific page to track specific actions people take on your website. For example, एक purchase standard event है. So to track specific standard event, you will need to add the specific standard event code that is relevant to each of your varying events. Your page, your button click, purchase standard event जैसे होता है. So when a user make a purchase, they land on your purchase confirmation page. This is the page we want to install the purchase standard event. Now we will want the purchase standard event to fire when people make a purchase and are redirected to your purchase confirmation page. Now standard event code. The number one key to remember here is every page of your website should have the Facebook Pixel base code. Base code हम उसको कह रहे हैं जो बिल्कुल हमने पहले मैनुअली जिस तरह से सीखा था. So in the global header code, as I already guided you about. So but on each individual page of your website, you will want to track the varying specific event. So we'll have to add different snippets of standard event code to track these varying events. So events are actions that happens on your websites, like when someone makes a purchase. To track an event, you will need to place a piece of code on your website to let Facebook know that someone has taken an action on your website. So you have the option of manually installing the standard event or using via the event setup tool. Now, how to install standard events manually. अब आप देखें, आपने add event पे आए, click the add event and select from the pixel in the drop down menu. कर लिया आपने. When manually installing your Facebook Pixel base code, the default option for standard event installation is to use the event setup tool. So the other option is to manually install event using code. Again, we suggest a web developer. Once your Facebook Pixel is installed on your website, you will want to add event code snippet to page load. So button clicks and other events you want to track. How to manually install standard event code. For example, while most standard events are track event on page load, such as the purchase event firing when the purchase confirmation page loads, the add to cart event is unique as it occurs upon a button click. Track event on inline action. For example, an order confirmation is when the order confirmation page loads, so you can just paste that standard event code in the body of that specific page. जैसे यहाँ पे दिया गया, when someone clicks a button that is an action occurs on the same page, therefore it is an inline action. So the type of event will determine where you add the standard event code. Here is a button click coding example. For example, script में गए आप और आप track add to cart, insert event code here यहाँ पे. Now standard event code. Make sure to place this correct standard event code only on page and button that correspond to the event you are tracking. For example, if you are tracking purchase, add the standard event code only to the page where purchase are confirmed. जैसे यहाँ पे standard event code आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये Facebook ऑलरेडी आपको दे देता है. तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी कि अगर मैं add to cart करवाना चाहूँ और वहाँ पे ट्रैकिंग करना चाहूँ तो मैं कोड कहाँ से लाऊंगा. तो आपने standard event code से कोड वहाँ से उठा लेना, कॉपी कर लेना. मैन्युअली कैसे करते हैं? Manually add event code. Number one, copy the event code as instructed and paste it on the relevant page of your website. Be sure not to modify the pixel base code you have already placed in the header of your website. So the event code will just be added to the specific page each event appear on. Track event on page load. Track event on inline action. So choose this option if the event can be tracked when someone lands on a certain page, a confirmation, a thank you page after completing a purchase. So track event on inline action.
Choose this option if the event you want to track requires someone to click something like a subscribe button, sign up button that doesn't redirect the user to a new page. So rather the button just submit the info and keep the user on the same page. अच्छा, मैं इसको आपको बड़े अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ विदाउट दिस स्लाइड, लेकिन मैंने इस स्लाइड को टेक्स्ट बेस्ड इन स्लाइड को इसलिए रखा कि ताकि आप जब भी इसको फ्यूचर में देखें या अभी देखें, सो आप इसको बार बार रीड कर सकें, जो मैं कह रहा हूँ उसको आप रीड कर सकें, और आपके लिए जो रिकॉल है और जो रीलर्निंग है, और अगर आप इसको दोबारा आपको इसके पास आना पड़े या इसको पढ़ना पड़े तो आपके लिए इजी हो। सो अगर सिर्फ मैं बोलने की हद तक ही रहता तो आपको शायद समझ नहीं आती। सो टेक्स्ट स्लाइड क्रिएट करने का बेसिक मकसद ये है। नाउ फॉलो द पेस्ट इवेंट कोड इंस्ट्रक्शन। आपने इस लिंक पे जाना है। फॉर पेज लोड इवेंट्स प्लेस द कोड just below the closing header section of the page. For many websites, this will be right after the opening body tag. For inline action event, add the event code between script tags next to the action you want to track. So event page for page load event के लिए you have to place the code just below the closing header section. लेकिन inline action के लिए आपने वहां पे पेस्ट करना है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही करना है जहां उस और नेक्स्ट टू द एक्शन जो आप उसको ट्रैक करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आपने इनलाइन एक्शन इवेंट्स के लिए इस तरह से कोड को पेस्ट करना है। नाउ इंस्टॉल स्टैंडर्ड इवेंट्स फेसबुक इवेंट सेटअप टूल के थ्रू। आएंगे ऐड इवेंट पे। वंस योर फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल्ड ऑन योर वेबसाइट, you will want to add event code snippet to page loads, button clicks and other events you want to track. आएंगे add events पे। From the pixel, navigate to your event manager, data source, then Facebook pixel page। फिर आपने add event क्लिक करना है मेन्यू में से, और from the pixel आपने select कर लेना है। अच्छा जी, एक पॉपअप मेन्यू आएगा जहाँ पे ओपन इवेंट सेटअप बटन होगा। So Facebook's event setup tool is the no coding option for installing events on your website. Your website already has a Facebook pixel base code over here. Now just enter the URL for the specific page on your website that you need to add a standard event to. So click the open website button. This will open a new tab in your browser with the event setup tool. अच्छा जी, now I am tracking the lead event for every time a user click the send button. So I created this event by clicking the plus track new button option in the Facebook event setup tool. आपको ये सारी चीज़ थोड़ी थोड़ी टेक्निकल लग रही होंगी, लेकिन आप थोड़ा बहुत वर्डप्रेस को सीखें भी, थोड़ी बहुत बेसिक ट्रैक कोडिंग की हल्की फुल्की आप थोड़ी सी बिल्कुल बेसिक नॉलेज ले लें, कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की और कोडिंग की बिल्कुल बेसिक नॉलेज। कोई 2-3 वीडियोस आप यूट्यूब से देख लें, किसी बंदे से पूछें, थोड़ा बहुत नॉलेज ले लें, जो बिगिनर्स का नॉलेज होता है, जो एमेचर्स का नॉलेज होता है, इस तरह का नॉलेज आप ले लें। सो आपको इतनी इन डेप्थ कोडिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की हद तक आपको थोड़ी बहुत कोडिंग की आप समझना पड़ेगा। आपको देख लें, 2-3 डॉक्यूमेंट्स देख लें कोडिंग के, तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। नाउ वंस डन, आई जस्ट क्लिक द फिनिश सेटअप लिंक। सो इफ आई हैव मोर इवेंट्स I want to set up, I can continue to browse this website and add them as I wish. So we can always come back to add or delete event. Now repeat the event setup tool process for each specific page you want to track specific standard event on. अब मैं एग्जांपल हम देख लेते हैं कि फेसबुक इवेंट सेटअप टूल्स की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। आइए जी, this is a new product page we just created that doesn't have any event setup on yet. ठीक है, once this new product page we want to track user via the view content event. The view content event is for tracking someone who viewed an item from your Facebook product catalog. आपने बाकी चीजों में नहीं देखा, जहाँ पे ये एरो लगा हुआ है उसको देखना, और जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है बॉक्स में उसको आपने देखना रेड बॉक्स में। Now the track new button enables you to create an event that track actual click on this page. साथ साथ मेरे आप मूव करेंगे तो आपको ये चीजें इजिली हाईलाइट होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी। This is perfect for creating a pixel event that tracks users when they take a specific action on your website. Then
you can retarget this warm audience in the future Facebook ads. Now, but for overuse, we just want to track people who navigate to this product page. View content event. In the drop down menu, select the event you would like to track. Schedule है, start trials, subscribe, जो भी आप track करना चाह रहे हैं. Confirm the URL is correct. Okay. Now then click the confirm button to begin tracking this standard event. As you can see, this event is now installed. Click finish setup to exit. Click finish. That's it. Ab test event. Once your Facebook pixel page, on your Facebook pixel page, आपने test event की टैब को क्लिक करना है. फिर URL यहाँ पे पेस्ट करना है. You want to test on and open the website button. This website will open in new tab and you can see in real time your pixel is firing. You can view and compare events on the overview tab over here. जो भी आप देखना चाहें, लाइक पेज व्यूज, जनरल इवेंट्स, लीड्स कितने हैं, इनिशियल चेकआउट्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं. क्रिएट कस्टम कन्वर्जन्स जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे. अच्छा जी, वंस द फेसबुक पिक्सल बेस कोड इज इंस्टॉल्ड ऑन योर वेबसाइट यू कैन क्रिएट कस्टम कन्वर्जन. अब आपने करना क्या, यू हैव टू नेविगेट टू योर इवेंट्स मैनेजर एंड क्लिक कस्टम कन्वर्जन्स इन द लेफ्ट साइड बार. आगे जी कस्टम कन्वर्जन्स पे क्लिक ऑन द क्रिएट कस्टम कन्वर्जन बटन. In the pop-up menu, name the conversion. First name your conversion. This is what will appear in your ads manager for conversion campaign and tracking. Name the custom conversion for easy identification. ये मैं बहुत बार आपको पहले बता चुका हूँ. Now confirm you select the correct Facebook pixel under the data source field. Select a custom event for all URL traffic as your conversion event. The default is all URL traffic. Next, select the standard event category that best describes the conversion event you are optimizing. The default Facebook selected category. Now finally, set up a rule using event parameter or a URL. So these rules tell Facebook what equates this specific conversion. Now create custom conversion. आपने URL equals URL contents पे गए. A common question we get for custom conversion is, should I use URL contents or URL equals? We go deep in this blog post. आप ये देख सकते हैं कि आपने क्या यूज करना है, URL कस्टम यूज करना है या URL contents यूज करना है, URL equals यूज करना है. तो ये आप इस ब्लॉग पोस्ट से भी जाके देख सकते हैं या नेट से भी आपको देख सकते हैं. काफी हेल्प इसमें मिल जाती है. Once you created this custom conversion, open a new browser and navigate directly to this URL to activate this conversion in your Facebook pixel. Now create a custom conversion. If you want to create a custom conversion for a specific event, you can select the conversion event, then select event parameter, and for the content equals type in the product ID. Finally, add the optional conversion value to link with this product sales in your ad reporting. Sales price वगैरह अगर आप करना चाह रहे हैं, नीचे enter conversion value. Create custom conversions. As you can see, after navigating to this custom conversion URL, the conversion is now active. Now navigate to your ads manager page and click the create button. Create a conversion objective now. Open a new tab and navigate to your ad manager. Click the green add button and select the conversion campaign objective. उसके बाद आपने आना है जी at the ad set level under the conversion section, select your newly created custom conversion under the conversion event menu or any other conversion event you want to track via the conversion campaign purchase. You can create a new custom conversion right from your campaign creation page via the define a new custom campaign. यहाँ पे जैसे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है. फिर आप जनाब once you publish your conversion ad campaign, you will see the results column on your ad manager page tracking your total conversion event. So once the custom conversion start tracking the custom event, it will be used to optimize ad delivery by Facebook. यानी Facebook ने कहाँ ad देना है. That means Facebook will show your ad to people most likely to convert based on past conversion tracked. So via other events in ads manager, view other events in ads manager. अगले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे. So
लेक्चर चूँकि थोड़े लंबे हो रहे हैं, आधे घंटे पे जा रहा है, सो कोई बात नहीं, टॉपिक थोड़ा कम्प्लेक्स था, थोड़ा टेक्निकल नेचर का था, तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा इलोंगेट करके लेक्चर्स को आपको वन गो में वो चीज़ें सारी सिखा दूँ, ताकि आपके लिए बार बार टू एंड फ्रो ये जो अटेंशन डाइवर्ट होती है वो आपकी अटेंशन डाइवर्ट ना हो। मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत आसान तरीके से और टेक्स्ट बेस स्लाइड को लेके चलूँ, और अपने प्रेजेंटेशन को लेके चलूँ, अपने लेक्चर को लेके चलूँ, और एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे आके आपको चीज़ें सिखाऊँ, जिस तरह से आप स्पून फीडिंग समझ लें। मैंने इतने इस लेवल पे आके मैंने ये चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की। सो होपफुली आप ये सारी चीज़ें मेरे साथ साथ अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। सो अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे व्यू अदर इवेंट्स इन एड्स मैनेजर। अच्छा जी, तो हम पढ़ेंगे व्यू अदर इवेंट्स इन एड्स मैनेजर, कि एड्स मैनेजर में बाकी इवेंट्स को या अदर इवेंट्स को हम कैसे देखेंगे। सो question is, can I see other events that derived from my ad? You can view that ad resulted in any event, purchase ho, have lead ho, view content ho, as long as your ad level had the tracking website event options enabled, right? So the tracking section is located under the ad level in your ad editor. जैसे ही आप आगे जाएंगे आपको चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी. So under the column drop down menu, select the customize column and scroll down the conversion column option. You can toggle on standard events column, and now you can toggle on custom conversions. Check mark the total checkbox next to the event, and you want to view in ad manager such as the add to cart event. Now as you see, I add the custom column website purchase and a traffic campaign resulted in 27 website purchases. So as long as Facebook pixel tracking is turned on for any campaign, you can track any event that ad campaign resulted in. So custom event क्या होता है कि custom events enable Facebook to collect more data about your specific conversion rather than just a generic standard event. So for example, a purchase event code track purchases on your order confirmation page, but let's say you use separate sales page, funnel or checkout pages using a software like ClickFunnels भी एक software है जो tracking के लिए use होता है for your varying product services as well. You can create a custom event for each specific funnel and purchase or any custom event you want to track. Now custom event purchase example. This is the purchase event code snippet that you will paste into the coding below the head tag on your purchase confirmation page. As you can see, the track event is for the standard event purchase, and I have added the custom event name to this code snippet. When a user land on this page, the custom event name and the standard event यानी purchase के नाम से will fire in your website pixel, Facebook pixel. So therefore tracking the both events in your Facebook event manager. And for each new custom event you create, you will also need to create a custom conversion. The custom conversion is for tracking the custom event in your ads manager and attributing that conversion to ad campaign. So before creating your custom conversion, you will need to install the custom event code on your specific web page, then navigate to that page so that the event code fires on at least one time. Then the custom event will appear as a custom conversion event option. So under the custom event as part of the drop down menu. So retargeting and remarketing के बारे में देख लेते हैं. I often mention the term retargeting or remarketing throughout this course. So this simply means targeting your ad to those users who have already engaged with your brand on some touch points, so which have tracked via Facebook pixel. So as example, with the Facebook pixel installed on your website, you can create a custom audience that consists of users who visit a specific page on your website. So click the button, for example. So you can then create an ad that is highly customized to this specific audience. We can discuss the benefit of this all on Bingbo course bundle, जो मैं इसके बाद भी एक कोर्स लॉन्च करने का सोच रहा हूँ अपने ही किसी प्लेटफॉर्म से. So share testimonial highly targeted ad content when we remarket to these customers. So up next we will discuss how to retarget these users using your Facebook pixel via Facebook audience. So अगले जो लेक्चर मैं क्रिएट करूँगा वो एक लेंथी लेक्चर होगा ऑडियंस के हवाले से, वो भी हमें देखना पड़ेगा, वो भी हम सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता. So as you can see this in this new ad creation screenshot, we are retargeting a custom audience, including people who have visited a specific page in the past 7 days, but excluding past buyers. Therefore, only targeting users who haven't made any purchase. This is power of the Facebook pixel जो आप ये सारा चीजें देख रहे हैं. So
How to verify your domain? So domain verification established when Facebook Business Manager account has authority to configure and prioritize the conversion event for given domain. So how to verify your domain? Add a DNS text entry to your DNS record to confirm that you own the domain. ये आपका आप खुद कर सकते हैं या फिर आपका डेवलपर कर सकेगा. Upload an HTML file provided by the Facebook to your web directory and confirm domain ownership in Business Manager and add a meta tag to the head section of your domain home page. So ये मैं आपको वन बाय वन सिखाऊंगा भी. आपने own domain पे जाना, ऐड करना है यहाँ पे and choose one as a domain verification option and follow the instructions. And once you upload, add the verification on your website and verify button. iOS 14 plus aggregated event management किस तरह से हम करेंगे ये भी हम देख लेते हैं. Aggregated event management basically Apple has announced a new feature आप कह रहे हैं या new change कह लें, has announced change to iOS 14 device that will impact how Facebook will receive and process web services or web events. So Facebook will now use the aggregated event management protocol to process events from iOS 14 devices that are opted out of data sharing to help you optimize and understand the efficacy of your ad campaign. So by default, Facebook adds up to 8 events on your domain that are recommended for your business, but you can manage these configuration in event managers as well. So navigate to your event manager page. Just how it works. The aggregated event management one-time setup will be automatically done as long as your pixel is installed and your domain is verified. On your event manager page, click the aggregated event management tab. Click the configure web events page. यहाँ से web event configuration के, as you see, we verify your domain already. Facebook will track and prioritize what they think your 8 events should be. Click the edit event button and now change to events configuration can take 72 hours. ये अपने mind में रखना है. Click the it may take 40 hours to see result, but मेरा ये experience है 40 hours से ऊपर ही है, तो that's why मैं आपको recommend करूँगा 72 hours तक आप 75 hours तक wait करें. Click the edit button and in the it is on this page you will add your 8 total events you want to track in iOS 14 devices. So you can drag the events to change their ranking from lowest to highest, and then toggle on value optimization. You will need 100 plus events fired in the last 7 days. Once you have added your 8 events you want to track on iOS 14 devices, click the submit button and confirm your event changes. These changes will take up to 48 to 72 hours. So for ads targeting iOS devices, you will need to give your split test a bit more time to collect results. Typically 7 से 10 दिन इसमें लग जाते हैं. Now, on the ad set level of campaign, scroll down the optimization and delivery. Click the attribution setting, drop in the drop down menu, and we use the 7-day click or 1-day view setting. So we want Facebook to learn from conversion that happened within a week and show ads to people likely to convert in the next week. Conversion API के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं. Conversion API basically Facebook का एक ऐसा business tool है that let you share events directly from your server to Facebook. So the conversion application program integration basically होता है. Work with your Facebook pixel to help improve the performance and measure of your Facebook ad campaign. So conversion API is not required. The Facebook pixel is sufficient for tracking everything for nearly 99% of your clients. But to ensure accurate event tracking, the conversion API is an additional feature you can optionally implement to improve website tracking, especially after the iOS 14 update. So to see the best practices and how to use the conversion API in additional to the Facebook pixel, आप ये link visit कर सकते हैं. Again, click on the किस तरह से navigate to your event manager, then data source and then Facebook pixel page. फिर आपने click event button पे click करना है, click add events, and then click using the conversion API option and install code manually. Then continue and then select the event you want to send through the conversion API and then check mark all the parameters that your websites collect. For example, over course sale website collects name, address and email, everything, and then confirm setup, then send instruction to your web developer to integrate your web into the Facebook conversion API, or you can manually implement the API by yourself. We suggest have a developer. ठीक है, जो मैंने पहले बताया अपवर्क से ले लें, कहीं से लें, कोई दोस्त वगैरह उससे उठा लें, उसके साथ मशवरा कर लें. सो अगर आप कारनेज में काम कर रहे हैं तो उसके साथ आप कर लें, टाई अप कर लें. देन सिंपली पोस्ट दी जॉब टाइटल फेसबुक कन्वर्जन एपीआई वेब डेवलपर कहीं भी तो आपको मिल जाएंगे. लिंक्डइन पे करें, फेसबुक कहीं भी करें, या आप किसी दोस्त से कंसल्ट कर लें, वो थोड़ा सा इजी और सस्ता भी पड़ता है. Conversion API implementation guide, then get started.
click the generate access token button and then copy the access token code, and now your web developer will create a post request on your website using your access token, events and parameters, and here are the parameters we selected for the conversion API. Once the code is implemented, your web developer will launch test event, and events and parameters sent from your server can be managed in your event manager the exact same way as your other pixel events are being managed. So यहाँ पे हम पिक्सल कन्वर्जन API, अब हम देखते हैं कि CRM में किस तरह से ट्रैकिंग होती है. Connect data source, connect your CRM customer relationship management software जो होते हैं to deliver your lead generation ad to people most likely to convert. So this works for any CRM, Zoho है, HubSpot है, Salesforce, ये कोई भी CRM है. जैसे हम काम कर रहे होते हैं एप्सफ्लायर पे है, एडजस्ट है, उसके बाद साइट्स है, ये सारे हम इन चीज़ों पे भी काम कर रहे होते हैं. नाउ select CRM, जो भी आपका CRM है, then create a pixel, connect your CRM, configure your sales funnel, then next select your Facebook pixel, click the installed code manually, sending the code instruction to your web developer via email, code instruction to your web developer to integrate your CRM within the conversion API. So ये सारी चीज़ें आपको web developer करके दिखाएगा. So यहाँ पे हमने ये सीख लिया कि किस तरह से हम फेसबुक पिक्सल को, कस्टम इवेंट को, कस्टम कन्वर्जन्स को, स्टैंडर्ड इवेंट्स को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह से हम उनके थ्रू ट्रैकिंग कर सकते हैं. सो होपफुली आपने यहाँ से काफ़ी चीज़ें आपने सीख ली होंगी, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है स्लाइड्स बनाते हुए भी, स्लाइड्स को डिलीवर करते हुए भी, कि आपको इतना ईजी वे से आपको समझाया जाए कि ताकि आपके लिए ये कोई प्रॉब्लम ना रहे. सो आप इन स्लाइड्स को एक बार, दो बार, तीन बार, बार इसको देखिए और इसको साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएं. कोशिश करें बिल्कुल सिमिलर एक ऐसी प्रेजेंटेशन आप खुद भी बनाएं. असाइनमेंट नहीं बता रहा आपको, एक आपकी एक्सरसाइज के लिए बता रहा हूँ. आप कोशिश करेंगे एक ऐसी ही एक सेम प्रेजेंटेशन बनाएं जहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने काम किया हुआ है ऐसे ही आप खुद भी रिकॉर्ड करें, ताकि आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए और अपनी लर्निंग के लिए, ताकि आप इस चीज़ को आगे इन्हांस कर सकें, बढ़ा सकें और आपकी लर्निंग स्ट्रांग हो सके. सो होपफुली आप इस तरह से जैसे मैंने आपको गाइड किया आप ऐसे इसको लेके चलेंगे तो आपकी जो लर्निंग है किसी भी क्लाइंट के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, या किसी अपने लिए या अपने बिजनेस के लिए, सो आप इस लर्निंग को वहाँ पे अप्लाई करके कुछ पैसे कमा सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. सो अब मिलते हैं. ऑडियंस का एक लेक्चर होगा कि फेसबुक में ऑडियंस को कैसे सिलेक्ट करते हैं, ऑडियंस क्या होती है, ऑडियंस को बिहेव कैसे होता है, ऑडियंस को ट्रैक कैसे करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम उसमें स्टडी करेंगे. वो भी थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा आपका अटेंशन स्पैन थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, आपके जो आपका टाइम थोड़ा सा उसमें ज़्यादा कंज्यूम होगा. बस इतना ही, आधा घंटा 15 मिनट क्या हम 20 मिनट का हम लेक्चर करेंगे और उस इंशाल्लाह ऑडियंस को भी हम सीख सकेंगे. सो आफ्टर दैट आई बेट कि आप यू विल बी अ गुड फेसबुक marketeer after this lecture. I hope and I believe that you will be a good Facebook marketeer. So thank you so much. आपने कोई भी क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, आप मेरे ईमेल पे मुझे टच कर सकते हैं. एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया गियर्स जो मैं अक्सर स्लाइड्स में पहले दे चुका हूँ. तो होपफुली यू विल फॉलो मी एज वेल. सो थैंक यू सो मच. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.